because any area problem you need to have diagnosis. So diagnosis has to be standardized. So NANDA, that is in North American Nurse Diagnosis Classification, where it has nursing outcome classification. Okay, these are used worldwide. This was developed in North America, as the term suggests. So सबसे पहले NANDA 1 आया था, classification of nursing diagnosis शुरू, actual and potential health problems they were mapped. Okay, and then उसमें comprehensive list बनाई गई, definitions क्या होंगे, characteristics क्या होंगे, यानी कि supposedly if I give you an example, self-care deficit related to injury or amputation or aging or some diagnosis depending upon that causativeness, that nursing diagnosis happens. So ये evidence based outcomes, यानी कि अगर आपको पता है उसका कोडिंग हुआ है, उसका लैंग्वेज अंडरस्टूड है, तो उसके बेस पे इंटरवेंशन भी हम जल्दी रिट्रीव कर सकते हैं. जैसे आउटकम इवैल्यूएट, उसी तरीके से मेजरिंग पेशेंट आउटकम, आपने नर्सिंग डायग्नोसिस तो कर दिया, उसका आउटकम भी इवैल्यूएशन करना है. दैट फोकसेस ऑन मेजरिंग और इवैल्यूएटिंग पेशेंट आउटकम. ओके, और पेशेंट आउटकम कैसा होता है? देयर इज अ स्केलिंग टू इट. ओके, इट कैन बी लाइकार्ट स्केल, it can be any other Brandon scale which is used for assessment of the bed sores. Okay, this scaling module is incorporated in outcome evaluation. Okay, a comprehensive outcomes भी देते हैं, that is psychological, sociological, social, right? क्योंकि problems physiologically नहीं रहते, साइकोलॉजिकल भी रहते हैं, सोशल भी रहते हैं, ओके, बिहेवियर भी रहते हैं. सो दैट मेजरिंग स्केल, ट्रैकिंग इफेक्टिवनेस कि आउटकम अच्छा बेटर है या नहीं है, किस स्केल पर है. वी नीड टू इम्प्रोवाइज और नर्सिंग डायग्नोसिस. ओके, दैट देन इट बिकम्स अ chain. So for example, nursing diagnosing, impaired physical mobility, then limitation in independent purposeful physical movement of the body or body segment, impaired skin integrity, क्या है, damage to epidermis, dermis और subcutaneous. तो इसमें epidermis ही हुआ है या dermis है या तीनों subcutaneous, dermis या epidermis हुआ है. acute pain है, so unpleasant sensory emotional experience arising from actual or potential tissue damage. Okay, these kind of nursing diagnosis you might have seen. सो स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज, यानी कि अगर मान लीजिए सिर्फ impaired physical mobility and with this definitions or this subcategories come and this is informed to other nursing officer, so she will say okay, she has this patient has the pain emotional experience due to tissue damage. Okay, it could be which tissue damage, where it happened, and so on so forth. Ineffective breathing pattern, that is inspiration and expiration that does not provide adequate ventilation. It could be due to say obstruction. It could be due to ventilator is there, the patient is comatose, ventilator is there, right? So, or it could be due to an foreign body which had gone in. So these give us the accurate picture and gives correct nursing diagnosis, and these can be used by nurses for better information exchange. Then standardized language है. So in any of these nomenclatures which we use, they are standardized. They are interprofessional collaborations like different healthcare disciplines can use. यानी कि एक PH पब्लिक हेल्थ नर्स भी यूज करती है, कर सकती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स यूज कर सकती है, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल नर्स भी कर सकती है, राइट? तो कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंटेशंस रहेंगे. ओके, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस रहेगा, आउटकम मेजर्ड, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा,
क्रॉस कल्चरल अडेप्टेबिलिटी ले सकते हैं, एंड नर्सिंग एजुकेशन के भी काम आ सकता है, राइट? So nursing informatics is another field where this is all used for clinical decision support, data analytics and patient individualized care में काम आता है. Okay? Yeah, we use it in और स्पेशलाइज्ड बेस्ड भी है, यानी कि मेडिकल सर्जिकल के अलग, नर्सिंग के अलग डायग्नोसिस है, पीडियाट्रिक के अलग, जेरोंटोलॉजी के अलग, मेंटल हेल्थ के अलग, एंड इट हेल्प्स इन रिसोर्स. अगर इतने नर्सिंग डायग्नोसिस है तो इट विल हेल्प इन स्टैंडर्डाइजिंग प्रैक्टिसेस, रिसोर्स एलोकेशन कैसे करना है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट नर्सिंग में कैसे होगा, राइट? यूज ऑफ दी स्टैंडर्डाइज नॉमेनक्लेचर एज अ पार्ट फॉर फॉस्टरिंग कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग, क्योंकि लर्निंग अच्छी होगी, सबको समझ में आएगा, then they can incorporate that knowledge better. Then we have HOMA system. HOMA system is basically client assessment. ये हम outpatients, यानी कि हम लोग इन हाउस जो हाउस कीपिंग एरियाज में है, यानी कि जिन जो होम केयर्स में है उनके लिए भी यूज कर सकते हैं. So it also helps in client and patient progress monitoring. 450 interventions है, 4 categories में है, and 42 standardized problems categories है. Okay. Yes, tell me. Sorry. OHOMA की as such full form. Okay, you want to know the OHOMA full form. Presently, no. OHOMA is just a terminology which is used. Okay. So, classification system है, comprehensive है, and this is environmental. Now, if look at this, this has 4 domains: environmental, psychosocial, physiological, health related behaviors. Okay, so ये problem findings को categorize किया गया है. So comprehensive हो जाता है, evidence based है और flexible है. So ओमाहा सिस्टम में स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क है जिसमें 4 की आउटकम्स दिए जाते हैं: साइंस, सिम्टम्स, नॉलेज, बिहेवियर एंड स्टेटस. ओके, इसमें क्वांटिफाइबल भी है, दैट इज स्केलिंग भी होती है, ट्रैक इंक्रीमेंट है, एंड इट इज टेलर्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड्स, अलाउइंग फॉर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग. स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क होता है, इम्प्रूव डॉक्यूमेंटेशन एज आई सेड, एंड ऑप्टिमाइज्ड डिलीवरी. So implementing the Omaha system, it involves structural step-by-step approach and successful adaptation model. So the key stakeholders are data mapping, system integration, and online monitoring. And also, this can be used for training, for integration in EHR and data governance. So here I would say conclude my topic, as most of them have the similar outcome, that is patient-centered, knowledge-based. So this is just a repetition. In nutshell, I want to say this can be used by most of the professional healthcare professionals working at different areas. For nursing, there are nursing diagnosis specifications. For doctors or clinical, for every healthcare worker, ICD-10 and trained people only, SNOMED CT can be used. And for the rest, or from the less, like for auxiliary healthcare workers or the paramedicals, OHOMA system is a better way because it gives you a very generalized picture, not more of a medical terminology. So I hope that you might have learned something from the class. Yes, sir. So as requested, I'll be sending you this PPT, sharing with you, as well as I will give you notes also. Okay? Word note, Okay, Word ma'am. note document. Okay? So is there any doubt that you want to ask me as such?
Is there any doubt you want to ask? No, ma'am. The topic was very clear. Was it clear? Chalo, the test will say that for that. Okay, it was nice interacting with you. And if you have any queries in future, you can contact through your ma'am. Okay. So I'll end the Thank you. session here. Thank you. Thank you, ma'am.